So let's do one thing. इसमें log को लेते हैं. So we'll have log ax plus b into e to the power y by x equal to x. Now log ax plus b is equals, plus log e y by x equal to log x. Now we have log ax plus b एक्सपोनेंट आगे आ जाएगा plus y by x into log e which is 1. लिख देता हूँ log e log x. अब log x से log e x plus b उधर ले जाते हैं. So y by x log e 1 हो गया. log x minus log ax plus b. तो y by x आ गया log x divided by ax plus b. Okay, so y is equals to आ गया x log x by ax plus b. Now differentiating dy by dx becomes equal to 1. So पहले x constant रखते हैं. ओके, log x अपॉन ax प्लस b की डिफरेंशिएशन हो गई. हम आई मीन इससे अच्छा तो वैसे ही छोड़ देते हैं, करना तो इसमें ही पड़ ही रहा है. एनीवेज रेसिप्रोकल हो गया इसका ax प्लस b डिवाइडेड बाय x इनटू, यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाएंगे तो ax प्लस b होल स्क्वायर एंड ऊपर आ गया पहले ax plus b constant, x की डिफरेंशिएशन 1 माइनस x constant, ax plus g की डिफरेंशिएशन a. So now this is equal to, यहाँ पे what do we have here? अच्छा, प्रोडक्ट रूल पूरा तो लगाया नहीं हमने. Now what do we have here? Plus आप log x upon ax plus b constant रखेंगे. So we'll be left with into x की डिफरेंशिएशन which is 1. अच्छा, ये आ गया. नाउ दिस इज, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो dy by dx इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई, ये कटा इससे ये कटा और वी हैव ax प्लस b माइनस ax डिवाइडेड बाय ax प्लस b प्लस log x अपॉन ax प्लस b. So final answer x से x कट गए, b upon ax plus b plus log x upon ax plus b. अच्छा, now ये आ गया dy by dx. For the differentiating double derivative चाहिए हमें, so d square y by dx square is equals to b into, we have -1, so -1 upon ax plus b whole squared into a plus log x upon a plus b की डिफरेंशिएशन हम पहले कर चुके हैं, ये पूरा पार्ट आया था. So we have ax plus b divided by x into ax plus b minus x a divided by ax plus b whole squared. x से एक कट गया, x से and then plus so ये तो डिफरेंशिएट हो गए पूरे. now d square by dx square is equals to minus ab divided by ax plus b whole squared and then plus, you're left with b divided by x into ax plus b. Yeah. Now what else can we do? Let's take the LCM. LCM आया ax plus b whole squared into x, यहाँ पे आया minus ab into x plus b into ax plus b.
this is equals to minus abx plus abx plus b squared divided by ax plus b whole square into x. Now this gives us, ये दोनों कट गए, b square divided by ax plus b whole square into x. This is b square y by dx square. Then x cube multiply कर देते हैं, b square y by dx square. dx square is equals to यहाँ पे b by ax plus b whole square and then into 1 by x है तो into x square आ गया. Now dy by dx हमारे पास ये पूरी वैल्यू थी. Even if we want to replace this x dy by dx minus y, so yeah, x into dy by dx करते हैं. Now it is, yeah, that is a little easier. So अगर मैं, ये मेरा जो फाइनल आंसर है dy by dx का, इसके साथ क्या करना है मुझे, x dy by dx मल्टीप्लाई करना है ना. So x dy by dx minus y. So ये मेरा आ गया था बाय द वे. ये पूरा जो हमने इस साइड से करा, इससे वी हैव आर LHS, okay, which is bx divided by ax plus b whole squared. Now if we solve RHS, let's just solve for RHS as well, and it's a lot simpler now. तो इस पार्ट से ले आते हैं अपना RHS. This was from 1. So from 1 we get dy by dx, ठीक है, is equals to कहाँ गया हाँ, b upon ax plus b minus, sorry, plus log x upon ax plus b, okay. Now we are simply multiplying x से, this side भी x multiply कर देते हैं. So bx divided by ax plus b plus x log x by ax plus b. Now इसमें से अगर minus y कर दें, so x dy by dx minus y equal to bx upon ax plus b plus x log x by ax plus b. और if you remember, y की भी यही वैल्यू आई थी, x log ax plus b from 2. So minus x log from 2 log x divided by ax plus b. ये दोनों कट गए, x dy by dx minus y होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा bx divided by ax plus b whole square. This is LHS equal to RHS. Hence proof.